भैया अनंत को स्टार्ट करूं? सो फंक्शंस आई थिंक आप सबने फंक्शंस 21 लेवल पे किए हुए हैं, बट हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. सो आपने शायद अलजेब्रिक फॉर्म में किए होंगे. we'll do with the help of the algebraic form, we'll do with the help of the Venn diagram and some vertical and horizontal line test as well, right? Starting from the Venn diagram. Venn diagram you know is associated with some inputs. ठीक है, कोई एक सेट है जिसमें all the set of the values are given. ठीक है, here I am saying that this is the values of inputs, right? And I'll have some another set that gives me a output. एक simple example से समझते हैं इस चीज को. Everybody is having any kind of machines at home, right? For example, washing machine है. Washing machine में आप कुछ कपड़े डाल रहे हो, dirty clothes डाल रहे हो, that are your inputs. उसमें कुछ processing हो रही है. The processing is your function, and you will get some one output, right? So you will get some output that is nothing but your this is the output and this is your input. वो जो बीच की प्रोसेसिंग है ना, वो हमारे केस में क्या है, हमारा फंक्शन है. So let's suppose it's having a 4 values. आपने वॉशिंग मशीन में 4 कपड़े डाले. Each input is associated with some output, right? Each input associated with some output. For example, this is function. Each input is associated with some output. And ऐसा तो नहीं होगा कि एक कपड़ा डालोगे तो 2 बाहर आएंगे. Each input will give you unique output. This is a definition of function. Simple. Each input is, that means इसको हम प्री इमेज भी बोलते हैं, sorry, प्री इमेज, and this is your image. Each pre-image is associated with some image, right? Is associated with some image, and each pre-image have a unique image. This is the definition of the function. I hope it's clear. Second, let's suppose, guys, there will be no noise at all. So let's suppose this is a function. Is this a function? Why? There is a one input left who is not, that is not associated with some output, right? So this is not a function. Guys, मुझे बार बार नहीं बोलना पड़े कि आप शायद बात कर रहे हो, we are getting disturbed. अगर बात करनी है then please go outside. Then let's suppose I am having these values. Is this a function? No, this is a function. Yes. Each input is associated with some output. Each pre-image is associated with some image. Possibility है कि two pre-image can give you one image. ये possibility नहीं है कि 2 students के 1 marks same number of marks आ सकते हैं, right? So this is a possibility. यहाँ पे इनपुट के साथ एक आउटपुट, 2 इनपुट की एक आउटपुट हो सकती है, बट एक इनपुट की 2 आउटपुट्स नहीं हो सकती. I repeat, each pre-image can have only one image, but one image can have more than one pre-images. One input
can have only one output, but there is a possibility that one output have two inputs, right? I hope it's clear. So next, coming towards the domain. Domain is nothing but the values in pre-image. That is the domain of this function is 1, 2, 3, 4. Right? There is one pre-domain as well. Let's first I'll start with this. So here this function domain is 1, 2, 3, 4 and 5. Right? Pre-domain is 5, 6, 7, 8, 9. All the values of images is nothing but your pre-domain. मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, मैं आ रही हूँ उसी पे. Range, the one who is associated with some input. ठीक है? That means 5, 6, 7, 8. यही था ना आपके माइंड में कि this is the range. कोडोमेन प्री-डोमेन एक ही बात. ठीक है? So this is the values of inputs. These are the values of output. Now range is a subset of codomain. Right? Range is a subset of codomain. Right? Any question till now? And I'll just tell you one thing. This chapter is really very important. I'll just give you one example. Let's suppose y is equals to, fx equals to, f of x equals to 3x plus 2. Or let's suppose I'll denote it with the y. So first, what is the independent variable? Let me know. This is from the algebraic expression I am explaining. In algebraic expression, we are having two types of variable. One is the independent, जिसको हम exogenous variables भी बोलते हैं, and another one is the dependent variable, जिसको हम endogenous variables भी बोलते हैं. Independent variable that can take values independently. They are not dependent on anything. ठीक है? Let's suppose now here the domain of this x belongs. This is belongs to. Means the values of x can take. X can take any real number from minus infinity to plus infinity. It can take any real number from minus infinite to plus infinite. So I am just assuming, let's suppose x equals to 5. Right? So this is the one value from entire range of the entire domain of the function, right? So if I'll get y is equals to, now I am putting 5, so I'll get 17. This value 17 is dependent on this value, right? This value is dependent on this value. If this value is 6, so the value of 17 will change. If let's suppose this value is 20, again this will change. Right? So this is the dependent. This is having a one unique value output. Right? One input is associated with one output that belongs to real number. Right? Any question? So there is a image. This is the pre-image in case of our Venn diagram, and this is the image, right? Now here in mathematics, graphs plays an important role over here. I will explain this again with the help of the graph as well. Now independent variable is always on x-axis, right? And dependent variable is on the y-axis.
Independent means pre-images, inputs, and dependent means images, output. ठीक है? So let's suppose I am having this function, right? Now if I just want to check it out, the domain of this function, this is the from A, let's suppose to B. This is my domain from A to B. Am I right? See, okay? So the domain of this function is, sorry, if A and B are including, then we are having a close bracket. If A और B are not including, आगे थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो मैं बताती हूँ कहाँ include होगा कहाँ नहीं. So then we will have the open bracket, and in either case के अगर एक including है तो वहाँ open हो जाएगा. And what is the range? This is my range. Let's suppose this is C and this is D. This is output. So this is my range. So range is C to D. Right? Got it? So yes बेटा, इसको अगर मैं सेम चीज को अगर मैं ग्राफ्स में भी कह रही हूँ कि A is associated with C, let's suppose मैं इसको वेन डायग्राम में लेके जा रही हूँ. A is associated with C. A is input and C is your output result, right? And B is associated with D. फिर और भी बीच में वैल्यूज हैं, right? So each unique input is having one unique output, right? Each pre-image is having a image. So this is a definition of the function. जैसे लास्ट केस में अभी जैसे हमने बनाया था, so y5 यहाँ पे था, this gives me a 17. राइट. सो इन्हीं वैल्यू से ही वेन डायग्राम बनता है, कहीं और से नहीं बनता. सो यू कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द एनीथिंग. एनी क्वेश्चन? So let's define the types of the function. There are 4 types of the function. One, many one, onto, into. So there can be right. We can have 4 functions. The first function is 1, onto. Second 1, into. Sorry, many one, onto, and many one, into. I hope सबको clarity. 1, onto, many one, onto, one value. First हम आ रहे हैं 1, each pre-image is associated with some images, right? Each pre-image associated with some images, right? And here codomain is equals to range. For each output is associated with some inputs.
देयर इज नो एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं है ना. सो दिस इज 1 2 1 1 on 2. कोडोमेन फुली यूटिलाइज होना चाहिए. राइट, देयर इज कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज. ठीक है. ईच इनपुट, that is each pre-image is having a image, unique image. function की definition से ठीक है. 1 is having 4, 2 is having 6, 3 is having 5. ठीक है. each output is having a unique input. 4 is having 1, 6 is having 2, 5 is having 3. Right. So and codomain is 4 5 6, range is 4 5 6. So on to. ठीक है. Got it? First type is 1 1 on to. 1 1, each pre-image is having a images, unique image, and image is also having a pre-image. And codomain is equals to range. That means the range is right. Second is, this is the first type, 1 1. Second, again I am having, ठीक है. So now each image, each pre-image is having a image, and each image is having a pre-image. 1 1, right? But there is one value left जिसकी pre-image नहीं है. So that means range is a subset of codomain. So codomain, range is a subset of codomain. So here we are having a into. This is the example of into, right? Clear? Now I hope आप सबको यहाँ से समझ आ गया होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8, right? And there is one more. I'll make 1 2 3 5 6 7 8 and 9. ठीक है. Now here let's suppose this is 3 is also having this and 4 is having this, right? And here I'm having 1 2 and 3, right? So each pre-image have a image, क्योंकि वो तो डेफिनेशन कहती है, उसके बिना तो हमारा फंक्शन ही नहीं डिफाइन होगा. Here each image, one image is there, is having 2 pre-images. So ये क्या होगी एग्जाम्पल ऑफ. सेम विद दिस केस. ये भी तो है ना, इसकी 5 के पास 2 इनपुट्स है, 1 and 2, राइट? सो ये भी क्या एग्जाम्पल होगी, मैनी 1 की. गॉट इट? नाउ कमिंग टूवर्ड्स ऑन टू एंड इनटू. 1 इज ऑन टू, 1 इज इनटू. ये आप बताओ. ये है आपका थर्ड इमेज, ये है आपकी फोर्थ इमेज. थर्ड ऑन टू है कि थर्ड इनटू है? रीजन, codomain is equals to range. So on to, and this is into why there is codomain is a range is a subset of codomain, right? Very good. इसका मोर यूटिलाइजेशन हम फर्दर चैप्टर्स में भी करेंगे. अब हम आते हैं इसके इनवर्स पे. यहां से एक यूनिक चीज आपके पास आएगी. अब इनवर्स करते हैं. इमेज को प्री इमेज एंड प्री इमेज को इमेज बना.
फर्स्ट केस था मेरा 1 2 एंड सॉरी यहाँ पे 4 5 6 एंड दिस वाज 1 2 एंड 3 1 के साथ था मेरे पास 4 2 के साथ था 6 एंड 3 के साथ था 5 sorry right now let me know the inverse is a function or not why this is the pre-image this is the image each pre-image has a unique value of image and second thing सबकी unique values are every image is associated with some every pre-image is associated with some image and every pre-image have a unique value of the image. So inverse is also a function in case of 1 1 on 2 right. Coming toward the second था आपके पास 4 5 6 7 1 2 3 4 was not associated so 5 with 2 6 right so is this a function no because यहाँ पे मेरे पास एक there is a pre-image who is not having a so here inverse is not a function in case of 1 1 into third case था 6 7 8 1 2 3 4 so 1 6 2 7 was like 2 and 3 and 4 8 right now let me know is this a function q so one pre-image having a two images so again this is not a function inverse is not a function and last case मेरा है fourth let me erase all these things फोर्थ का रहने दे रही हूं बाकी सारे erase कर so fourth case was this is 5 6 7 8 9 1 2 and 3 right so 1 5 2 again 5 right and 3 6 right is this a function no again not a function only 1 1 on 2 is a function inverse उसका जो है function होगा rest किसी का function नहीं होगा I hope it's clear any doubt till now now let's do with the horizontal and vertical line test any question till now okay okay so horizontal and vertical line test कि whether this is a function or not अब मैं देख के ही बता दूंगी आपको कि आप बता दोगे means कि that is a function or not first हम कर रहे हैं vertical line test and then we'll do with the horizontal ठीक है any function x independent variable on the x axis dependent is on the y axis is
any function is there, right? And we are drawing just one vertical line. मैंने सिर्फ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है उस फंक्शन में, एनी वर्टिकल लाइन आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ इट एनीवेयर. लेट्स सपोज x1. नाउ व्हाट इट मींस, x1, the value of one input is associated with, इसी को मैं अगर वेन डायग्राम में बनाऊं तो what will be the shape? This is the x1 which is giving me two output. Is the function? Not a function. So in simple words, draw any line on the graph, vertical line, sorry, draw any vertical line in the graph that will tell you is itself is a function or not. So this tells that itself means कोई भी function itself is a function or not. Got it? Next है horizontal line test. Right? So now I'm drawing a horizontal line. Now what exactly it means? This is my horizontal line. Any horizontal line up you can draw. So here I'm having a one output and two input. अगर मैं इसी चीज को वेन डायग्राम में शो करती हूँ, so what it means that x1, x2 is having y1 output. Now let me know, is this a function? And inverse is a function? No, inverse is not a function. If any horizontal line cuts a function at two inputs, function तो the function तो है, but inverse is not a function. This is a test for the inverse function. Okay, whether the inverse is a function or not. Any question? फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार for just से. आप ग्राफ से बता सकते हो. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्रॉइंग दिस टाइप ऑफ ग्राफ, मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये एक से ज्यादा टाइम कट कर रही है, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, राइट? नाउ एक और लाइंस ड्रॉ करते हैं हम एक छोटी से ग्राफ से. नाउ यू हैव टू टेल मी वेदर दिस इज अ फंक्शन और नॉट. दिस इज माय ग्राफ. फर्स्ट वर्टिकल लाइन टेस्ट. आई एम ड्रॉइंग vertical lines. x1, x2, x3, x4, x5. Now tell me, this is the function? Yes. Q? Every vertical line cuts only once. That means every input is having a unique output. देख के पता लग गया? दिस इज अ फंक्शन. नाउ मैंने क्या करना है सेकंड केस में? वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं. सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन. सॉरी माय मिस्टेक. इनवर्स इज आल्सो अ फंक्शन, राइट? बिकॉज ईच हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स ओनली वंस. अभी ठीक बोला ना? सो if vertical line cuts once, the function is itself a function, and each horizontal line cuts one, inverse is also a function. और ये किस केस में होता है? कौन से फंक्शन में? नहीं, अभी तो बताया 1 1 और 2 के केस में, राइट? एग्जैक्टली. याद रखा करो, भूलना नहीं है किसी भी चीज को. ये तो बेसिक है, यहां से अगर आप कर जाओगे तो मीन्स आपका पूरा का पूरा क्लियर रहेगा. सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको आगे, क्योंकि यही सारे कॉन्सेप्ट आगे अप्लाई होने हैं. लिमिट्स में, कॉन्टिन्यूटी में, डिफरेंशिएशन में आप सारे देख के बता दोगे ग्राफ कोई.
अब आप देख के बता सकते हो फंक्शन है कि नहीं? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डोमेन एंड रेंज. ओके, डोमेन रेंज के बहुत कम जो है आपको न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में मिलेंगे, सेकंड चैप्टर ऑफ योर बुक, बट आगे जरूर मिलेंगे. आगे जाके इसका मेन कॉन्सेप्ट आएगा तो आगे मिलेंगे ज्यादा. ठीक है. सो डोमेन, व्हाट डोमेन इज, अभी बताया मैंने आपको. पहले मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग से एक ही बात कर रहे हैं. डोमेन रेंज, डोमेन रेंज क्या है? प्री इमेजेस इनपुट्स. ठीक है. अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? फाइंड आउट तो करनी पड़ेगी ना. समझ तो गए हम है क्या? उसके लिए दो ही लॉजिक है, ज्यादा कुछ नहीं करना. इफ अ फंक्शन इज गिवन एज इन द फॉर्म ऑफ fx बाय gx, लॉजिक वन क्या? देखो MME है, नाम बता रहा है, इकोनॉमिक्स में जो मैथमेटिक्स अप्लाई हो रहा है. राइट? तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द रियल थिंग्स. कोई भी इमेजिनरी चीज नहीं आएगी हमारे में. राइट? सो यहां पे अगर आपको ध्यान हो तो अगर नीचे डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट हो जाता है तो क्या होता है? इंफिनिटी, दैट इज बियॉन्ड आवर लिमिट्स. तो हम तो लिमिट्स में बात कर रहे हैं. राइट? सो दैट मीन्स फर्स्ट लॉजिक इज gx इज नॉट बी इक्वल्स टू 0. Right? The first logic says gx, that means denominator of the function should not be equals to 0. Let's take an example. 1 over 3x minus 2. 3x minus 2. So now my domain should be 3x minus 2 should not be equals to 0. 3x should not be equals to 2. And x should not be equals to 2 by 3. अगर मैं इस चीज को नंबर लाइन पे बनाऊं तो this is minus infinity plus infinity. Let's suppose this is 0. ठीक है. So this is let's suppose 2 by 3. So the x can take any values from 2 by 3 to infinity and बट ऑब्वियसली 2 by 3 नहीं आएगा. 2 by 3 टू इनफाइनाइट. इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट्स में रहती है, हमारी लिमिट्स में नहीं रहती है वो. ठीक है. और माइनस की साइड भी तो आएगी. क्यों? वो क्योंकि सिर्फ 0 तो हमारा तभी बनेगा ना जब ये 2 by 3 इक्वल होगा. माइनस 2 by 3 हो जाएगा तो क्या ये 0 हो जाएगा? नहीं होगा ना. सो ये सारी साइड भी आएगी. That is minus infinite to 2 by 3 again in the open brackets. So this means that x belongs to this. What it means? Belongs. All the real number except 2 by 3. Sorry, it's curly bracket. Right? Is that clear? The logic one is clear. Now coming towards the logic 2. कोई क्वेरी है लॉजिक वन के लिए? सो ये दो ही चीजें अप्लाई करनी, हमने ज्यादा फंडा नहीं लगाना कोई भी. लॉजिक 2, इफ एनी फंक्शन इज गिवन इन द स्क्वायर रूट. अगर आपको याद हो तो अगर मेरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 है तो एक्स किसके इक्वल होता था? प्लस माइनस 5. राइट? अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 25 है तो आपने पढ़ा था x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 अयोटा. अयोटा ने क्या बनाया इसको? इमेजिनरी नंबर. तो इमेजिनरी नंबर्स पे तो हम काम नहीं करेंगे. सो सिंपली स्क्वायर रूट में जो भी टर्म होगी वो पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. 0 के लिए भी डिफाइन है स्क्वायर रूट, बट नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है. राइट? सो fx में कोई भी टर्म हो दैट शुड बी पॉजिटिव. सो फॉर एग्जांपल अगेन यही ले लेते हैं 3x minus 2. नाउ इट्स इन स्क्वायर रूट. सो दिस वैल्यू शुड बी
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. साइंस का ऑफ इनइक्वालिटीज का बहुत ध्यान रखना है. दिस मीन्स नॉट इक्वल्स टू, ये सिर्फ इसके इक्वल नहीं हो सकता, बाकी इधर उधर कुछ भी ले ले. इसका मतलब है इसे 0 से नीचे नहीं जाना. What it means? So 3x minus 2 should be greater than equals to 0. 3x should be greater than equals to 2. X should be greater than equals to 2 by 3. Now अगर मैं इस चीज को नंबर लाइन पे प्लॉट करती हूँ, this is plus infinity, this is minus infinity, this is 0. अब ये है x 2 by 3. अब ये it can take only positive values. Now it's a greater than और इक्वल्स टू भी है, तो इक्वल्स टू के लिए क्लोज ब्रैकेट, सॉरी इंफिनिटी के लिए ओपन ब्रैकेट, राइट. सो दैट मीन्स x शुड बी ओनली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 by 3, नॉट लेस देन 2 by 3. इज दैट क्लियर? So there are only two things that you have to remember while finding out the domain and the range. The logic one is that denominator should not be equals to 0, and in the square root term it should always be positive, right? Greater than or equals to 0. Is that clear? अब आप न्यूमेरिकल करो. y equals to x minus 1 divided by x minus 2 x plus 3 whole square root. Now you have to find out the domain of the function. क्या चीज अप्लाई होगी? दो लॉजिक्स हैं ओनली, ठीक है. सो नाउ बट यहाँ पे क्या है, न्यूमिनेटर में भी एक टर्म है और डिनोमिनेटर में भी टर्म है और दोनों का स्क्वायर रूट भी है, दोनों का स्क्वायर रूट भी है. सो फर्स्ट कंसीडर, नाउ आई एम जस्ट कंसीडर x माइनस 1, ये चीज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, राइट? क्योंकि स्क्वायर रूट में है तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. So x should be greater than or equals to 1, right? Second, now I am considering x minus 2 x plus 3. two things are there. एक चीज है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कह रहा है कि ये चीज मेरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए. सेकेंड चीज है, सेकेंड थिंग इज इन डिनोमिनेटर. The denominator says it should not be equals to 0. So as a result, जब मैं दोनों conditions को apply करूंगी तो what I'll get, this term should be greater than 0. Equals to का term हट जाएगा, right? So x should be greater than 2 or minus 3. Means, right? So this is my term that x minus 2 x plus 3. As per the square root condition, this should be greater than or equals to 0, and as per the denominator condition, this should not be equals to 0. क्योंकि 0 हो गया तो फिर वो infinity में चला जाएगा. So now I am just applying two conditions together, greater than equals to, but equals to नहीं हो सकता as per the second condition. So ये equals to का साइन यहाँ से हट जाएगा, right? So this will be x should be greater than 2. Now I am not writing equals to, right? And minus 3. So now I have found three things for the numerator. Now let इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, शायद ज्यादा अच्छे से समझ आए. That is minus infinity
So there is, let's suppose this is 0, and here we are having -3. Here I am having 1. Here I am having 2. Right? So the x can take all the values from here to here. This, sorry, x can't take all these values क्योंकि यहां पे वो ग्रेटर देन -3 होना चाहिए ना, तो ये टर्म तो मेरी रिजेक्ट हो गई. राइट? सो दैट मीन्स -∞ से लेके -3 तक मेरी डोमेन नहीं. गॉट इट? नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी 0 to 1, sorry, -3 to 0. -3 to 0 says that कि the x should be greater than -3. ठीक है, ये कह रहा है कि x should be इस रेंज में आ सकता है. सेकेंड थिंग कह रही है x should be greater than 2. x should be greater than 2. So ये है मेरा greater than 2. थर्ड थिंग कह रही है कि x should be greater than or equals to 1. x should be greater than or equals to 1. So that means ये एरिया तो मेरा पहले ही रिजेक्ट हो गया. मैम 1 से ग्रेटर या उसके इक्वल होना चाहिए, तो 0 to 1, 2 to 1, 2 infinity. सी यहां से एंड तक जाएगा ना बेटा, 1 से लेके एंड तक. हाँ बिल्कुल. मैं आप क्या कह रहे हो, ये चीज तो हमने डिनाई कर दी, खत्म हो गया मेरा. ये तो मेरा डोमेन का पार्ट हो ही नहीं सकता. और डोमेन का पार्ट क्या है, जब दो चीजों को हम कंबाइन करते हैं तो व्हाट वी डू, वी यूज टू पुट यूनियन. राइट? सो फर्स्ट थिंग क्या कहती है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. ठीक है. सो x द ऑल डोमेन की एक कंडीशन होगी, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. राइट? x कैन टेक all the real values from all the values, real values नहीं कहेंगे हम, all the values equals to है तो क्लोज ब्रैकेट के साथ इंफिनिटी. राइट? सेकेंड कंडीशंस पे आते हैं. ये कह रहा है 2, तो दैट मीन्स मेरा 1 इंक्लूड नहीं जाएगा, आई हैव टू रिजेक्ट. -3 अगेन रिजेक्ट करना पड़ेगा मुझे. राइट? क्योंकि वो यहां से 1 से लेसर है. ठीक है, 1 से लेसर है. ठीक है, मिनिमम मेरी रेंज आ रही थी 1 से, बट यहाँ पे ये चीज इससे ड्रॉप हो गई, और ये चीज क्या है, इसने इसको ड्रॉप कर दिया कि अब मेरी रेंज 1 से नहीं होनी चाहिए. मेरी रेंज कहां से होनी चाहिए, मेरी डोमेन, सॉरी, डोमेन कहां से होनी चाहिए, 2 से. राइट? सो नाउ आई कैन कंक्लूड फ्रॉम ऑल दिस थिंग, कॉमन रीजन कहां आ रहा मेरा, यहां से, वेयर 2 is not included. 2 is not included. 2 से, right? So that means domain of this function is 2 to infinite with the open brackets. Is that clear? सारी कंडीशंस को हमने एक साथ अप्लाई कर दिया. राइट? एंड रेंज क्या होगी, हम इसकी मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में. ठीक है, मैक्सिमम तो चलो इनफाइनाइट है, तो वी कैन पुट इनफाइनाइट एज वेल, इनफाइनाइट से भी देख लेंगे, बट मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे. सो द मिनिमम जो आपकी वैल्यू आएगी, द रेंज विल स्टार्ट फ्रॉम दैट वैल्यू, एंड बीच में एक आधी कोई और वैल्यू पुट करके देन वी कैन फाइंड आउट द अपर लिमिट एज वेल. सो यहाँ पे अपर लिमिट तो इनफाइनाइट तक ही जाएगी. यहां तक किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो. एनी क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन करोगे आप खुद, मैं नहीं करूंगी. ये आप खुद करके मुझे प्लीज आंसर बताओगे. जहां पे कुछ क्वेरी होगी तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस. So y equals to x plus 1
raised to power 1/2 plus 1 over x minus 1 raised to power 1/2. Find out the domain. Now again I am having 2 points, right? Again I am having two points nahi, actually I'm having 2 conditions over here. तो first I'm पहले की तरह क्या करेंगे, consider x plus 1 square root, 1/2 means what? So square root of x plus 1. अब इस चीज को, कंडीशन को मैंने आपको क्या बताया कि क्या नहीं होना चाहिए, greater than or equals to, right? So this thing should be greater than or equals to 0, right? So here you can find out x plus 1 should be greater than or 0, x should be greater than equals to -1. ये आ गया मेरा एक कंडीशन फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट से x minus 1 raised to power 1/2 which is equals to x minus 1 square root, right? So second thing क्या कह रही है, अगेन जैसे अभी मैंने 2 things together की थी, 2 conditions है, डिनोमिनेटर should not be 0 एंड स्क्वायर रूट में should be greater than equals to 0, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, x minus 1 should be greater than 0, so x should be greater than 1. अगेन इसको मैं नंबर लाइन पे पुट कर रही हूं, so this is -1 and this is 1, right? So first कंसिडर क्या कह रहा है, फर्स्ट से पार्ट से मेरी ये सारी डोमेन है, सेकेंड पार्ट कह रहा है मेरी ये डोमेन है. सो दोनों का कॉमन क्या है, 1 से इनफाइनाइट, यहां पे इक्वल्स टू उसका साइन है नहीं है, तो दिस शुड बी 1 to infinity, right? Any question? सेकेंड चैप्टर आप रिवाइज करोगे, ठीक है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करो सो दैट यू कैन गेट सम, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ग्राफ्स करेंगे, ठीक है. ग्राफ करने के लिए सबसे पहले आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए अच्छे से. Just give me a minute. Any question, any query, anything you want to ask? Book beta, I have told you in the first class as well, in the second class as well, you have only one Hammond and Sadaster's book and first 9 chapters are in your syllabus. उसकी ई बुक आप डाउनलोड भी कर सकते हो, यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी फोटोकॉपी शॉप. आप उसको बोलो MME1 की रीडिंग्स दे दे, दे विल प्रोवाइड यू द रीडिंग्स. बहुत ज्यादा उसमें सिर्फ उतने ही चैप्टर्स करने हैं, यस यही है, राइट. सो उतने ही चैप्टर्स करने हैं जो वो आपको फोटोकॉपी करके देंगे, उसके ज्यादा नहीं. आप फ्यू डेज में आपको मिल भी जाएगा. एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू. Attendance, sorry.